एक नई पार्टी सामने आई है रिफॉर्म यूके उससे, और रिफॉर्म यूके के जितने भी सपोर्टर्स हैं बहुत बड़ी तादाद जो उन लोगों की है जो कंजर्वेटिव पार्टी से खुश नहीं है और उन्होंने रिफॉर्म यूके की तरफ वो गए हैं। नाइजल फराज इसको लीड कर रहे हैं और जो रिफॉर्म यूके उसके बारे में जो कहा यह जाता है कि वो एंटी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है और उसके बहुत सारे लीडर्स और उसके एक्टिविस्ट के बारे में कहा गया कि वो रेसिस्ट हैं और ये कि उनकी जो नज़रियात है वो मुसलमानों और जो मुख्तलिफ इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से वो बहुत इंताब संदाना और नफ़रत पर मबनी नज़रियात रखते हैं। लेकिन जो रिफॉर्म की जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेप्यूटी लीडर हैं वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, कराची बॉर्न है, बेंजामिन हबीब, जिनको बेन हबीब के नाम से जाना जाता है। वो ना सिर्फ ये कि रिफॉर्म यूके जो पार्टी है उसके वो जो सीनियर लीडरशिप में है बल्कि वो उसको उन्होंने डोनेट भी किया है। बेन हबीब एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन है, लंदन में रहते हैं, लेकिन नॉर्थैम्पटन की जो एक लंदन से बाहर की तकरीबन 1.5 घंटा बाहर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो रिफॉर्म के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि रिफॉर्म जिसके बारे में ये ख्याल ये किया जाता है कि वो मुसलमानों, पाकिस्तानियों, इंडियंस, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, वो उसके टिकट पर क्यों खड़े हो रहे हैं। बेंजामिन साहब, ये बड़ा अजीब लगता है कि एक पाकिस्तानी रिफॉर्म के टिकट पर इन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिफॉर्म को डिफेंड भी करता है, कैसे? या तो मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है तो मुझे माफ़ कर देना, उर्दू आई माई नीड टू गो इनटू इंग्लिश, बट हम इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अनब्राइडल्ड इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं। इमिग्रेशन तो एक अच्छी चीज़ हो सकता है. You know, people need to interact with other cultures, with other ways of thinking in order to develop and for cultures to evolve. But what we've had in the UK is unbridled immigration, you know, and we haven't been able to cope with it. So, for example, in the 1990s, net immigration in any one year was like 10 or 20,000 people. Last year, net immigration was 750,000 people. That's a city the size of Manchester. And the year before that, a similar number. And so the concern we have in Reform UK is that the country can't cope culturally with the rapid change that's required through this intake of immigrants, but also just economically. Our public services can't cope: NHS, housing, roads, education, etc. So it's not that we're anti-immigration. We just want immigration to take place at a pace with which the country can cope. And I know with Pakistan, you know, Pakistan's had its own significant problems with immigrants from Afghanistan, which you, I'm sure, are aware of. And Pakistan has found it very, very hard to cope with the level of immigrants coming in from Afghanistan, including the cultural differences between Afghanis and Pakistanis. You know, so that's the debate that's going on. ये बताएं कि यहाँ जो आपकी जो पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग नाइजल फराज ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ कि इस्लाम एक मसला है। तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके बारे जो व्यूज़ हैं वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामोफोबिक व्यूज़ हैं, और उनके उन व्यूज़ की वजह से जहाँ मुसलमानों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, अटैक्स होते हैं, ख़वातीन पे अटैक्स होते हैं, तो क्या मतलब आप कैसे मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो भी ब्रिटिश सिटीज़न है वो एक ही कैन आई से इक्वल, ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स आर इक्वल। मुझे कोई फिक्र, बराबर है, कोई फिक्र नहीं है कि ये मुस्लिम है, जो भी होना चाहते हैं हो सकते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है कि ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स need to be treated as equal. वो तो ये आपके व्यूज़ तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप जिस पार्टी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, और जो उसके लीडर हैं आपके, ये उनके व्यूज़ हैं कि मुसलमान इस मुल्क में प्रॉब्लम है। में ये इसके व्यू नहीं है। वो what he wants to have a debate about is what he would call radical Islam. So, you know, the more extreme form of Islam, which he believes to be anti-British. And there's a poll that came out, forgive me for speaking in English because it's a complicated subject, but there was a poll that was done recently, which Nigel was citing the other day on Sky News, in which, according to the poll, I think it was, I can't remember the exact percentage, but 25% of young Muslims believe in jihad, you know, and not the peaceful internal jihad, but the jihad of the jihad type jihad. And so these are the kinds of things that, you know, concern him. And of course, any radical set of beliefs is not a good thing. You know, we want moderation and we want a settled social construct in the United Kingdom. That's what Nigel
is arguing for. And it's very easy, I think, for the debate to get hijacked and for it to be portrayed as racist or Islamophobic. But I don't think Nigel is. If Nigel was racist or Islamophobic, I wouldn't be in the party. पर आपकी एक पार्टी के सीनियर लीडर ने पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को वो गाली उसने दी है जो एक्चुअली यहाँ पाकिस्तानियों को दी जाती थी। Yeah. तो वो और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड एक इशू तो है क्योंकि बिकॉज जो रिफॉर्म में जो वो लोग आए हैं जो एक्चुअली टोरीज का भी जो अल्ट्रा राइट वर्जन है वो सारे लोग जमा हो गए। Joatha, that guy who was filmed is an actor. Did you know that? His name is Andrew Parker. And लेकिन व्यूज तो रियल है। it's not clear to us that this guy was actually speaking his own views. When you listen to him in real life, Andrew Parker, he speaks really quite good English. And then he was putting on what he calls his rough accent. And he went to the doorstep. And even if Andrew Parker was an extreme right-wing racist xenophobe, even if he was that person, I don't think anyone goes up to the doorstep and talks the kind of nonsense he was talking. I mean, it was absolutely absurd language that he was using. And there just happened to be an undercover journalist at the scene. And so we're questioning whether the whole thing was a stitch-up. So we've made a complaint to the police, we've made a complaint to Channel 4, who are the people who aired it, and also to the Electoral Commission and Ofcom. ये बताएं कि आपकी जो पार्टी है आप कैसे देखते हैं इसके जो इलेक्टोरल इसके क्या चांसेस हैं सक्सेस के और यूँ लग रहा है कि आप तो पता नहीं कितनी सीटें जीतेंगे लेकिन टोरी पार्टी को आप लोग बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। डैमेज तो देंगे और डिजर्वेडली डैमेज देने चाहिए टोरीज को। देखो मुल्क का हालात देखो, the national debt is at a post-World War II high, taxation at a post-World War II high, no GDP growth, public services are broken, there are habitual strikes, the NHS waiting lists are massive, there isn't sufficient housing. This is all under the Conservative government. The Conservative government needs a good kicking, and this is the democratic process. We exist, Reform UK exists, because the Conservative government has habitually failed to deliver for the United Kingdom. And that's why I'm in politics. I'm in politics not because I want to be in politics. Let me be clear. I do not want to be in politics. I'm reluctantly in politics. I'm in it because the Conservatives have utterly failed. ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं आपकी तरह एशियन है हमारी तरह एशियन है वो जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के बने बड़ी होप्स थी जो आपके बहुत सारे अब सपोर्टर्स हैं कि वो शायद डिलीवर करेंगे कोई रेवोल्यूशन ले आएंगे कुछ भी नहीं कर सके क्या हुआ वो टेक्नोक्रेट है मेरे ख्याल में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है आप समझते हैं कि अगर ऋषि सुनक के बजाय कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो फिर भी टोरीज के लिए कुछ बेहतर हो सकता था नहीं आई थिंक द टोरी पार्टी is hijacked. I think the Tory party and Labour Party are both hijacked by what I would call a belief in top-down governance, governance with the aim for global prosperity and hoping that with global prosperity will come prosperity for this country. So they like to govern through international organizations, the EU, UN, WHO, World Economic Forum, etc. And they don't put the United Kingdom first. And I think that's the essential problem with both the Conservative Party and the Labour Party, that they're not pro-British. I know that sounds an absurd thing to say, but that is the case. And Reform UK is unashamedly, for the United Kingdom and for British citizens. So just coming back to where we started this interview, I don't care what your ethnicity is, what your beliefs are, what your sexual preferences are, how you identify as a gender. I don't care. If you're a British citizen, you are equal amongst every other British citizen. आखिरी सवाल ये बताएं कि जो आप क्यों समझते हैं कि जो मुसलमानों को पाकिस्तानीज़ को एशियंस को रिफॉर्म यूके को वोट देना चाहिए Because if you want a proud, prosperous, economically growing country, we're the only party that can deliver it. One of the great things, in a sense, I'm an immigrant. My mother's English, my father's Pakistani. But one of the great things about immigration is typically that actually you work really hard because you need to get on in life. You come to countries like the UK, the US, etc., because you're aspirational, because you want to get on. You're not
you tend not to want to be, or you tend not to be a burden on the state. And so what I would say to people who've come to this country from Pakistan, India, North Africa, wherever, is that if you should want a proud, prosperous United Kingdom. You know, when I'm in Pakistan, there are Pakistani flags everywhere, and I love that. Everyone sings the Pakistani national anthem. Everyone in Pakistan is proud of being Pakistani, right? Yeah. Everyone is incredibly proud of being Pakistani. In the United Kingdom, we've got to a stage now where you're almost criticized if you have the Union flag up or you have the St. George's English flag up. And we need to get back to believing in our country and putting our country first.